ओके सो आज की क्लास के लिए सबसे पहले हम लोग ओरिगामी बर्ड बनाना सीखने वाले हैं एंड फॉर दैट यू विल नीड एन पीस ऑफ स्क्वायर शीट। जनरली ओरिगामी का जो बेसिक पेपर है वो एक तरफ कलर्ड होता है एंड सेकंड तरफ वाइट, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, सो आई एम यूजिंग शीट which contain the square sheet of paper. And if anyone who does not know how to convert this a rectangular sheet into a square paper, you can just type in the chat box. So okay, so I think everyone knows how to make a square sheet of paper. ठीक है, okay, so let's begin first. तो सबसे पहले स्टेप के लिए हमें पेपर को हाफ फोल्ड करना है। हेलो हेलो जय, एक सेकेंड। हाँ, मैं Yep, sure. पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करने का अलाउ नहीं करता हूँ सिंस बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। राइट, या जय। तो सबसे पहले स्टेप के लिए हमने पेपर को हाफ फोल्ड किया है एंड हमने एक क्रीज बनाई। एज यू कैन सी हमें यहाँ पे एक क्रीज मिली है। नाउ अपने पेपर को आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, देन अगेन इसको हाफ फोल्ड। अब हमें इसको डायगोनली फोल्ड करना है। डायगोनली फोल्ड करने के लिए बस आपको दो कॉर्नर्स को ऐसे मिलाना है एंड देन एक क्रीज बनाना है। नाउ आपको यही प्रोसीजर सेम रिपीट करना है टू मेक अनदर डायगोनल फोल्ड। एंड लाइक इन बिटवीन किसी का भी अगर कोई भी फोल्ड मिस होता है, यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स दैट एनीथिंग लाइक डाउट और just I have missed my fold, then we can repeat the step. Now अब आपको अपने पेपर को इस तरीके से पकड़ना है एंड आपने जो डायगोनल फोल्ड बनाए थे उसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरीके से एक ओरिगामी स्क्वायर बेस बनाना है। ओके, सो इन बिटवीन किसी को अगर कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स लाइक डाउट और आई हैव मिस्ड माय फोल्ड और एनीथिंग। जय जय जय, एक काम yes, करते हैं, स्टार्टिंग से इतना फिर से फटाफट बता दे सिंस कुछ लोग थोड़ा बाद में ज्वाइन हुए। गाइस, तो एक बार स्टार्टिंग से फटाफट देख लो क्या क्या फोल्ड्स करना है। राइट, ओके, या देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव दिस स्क्वायर शीट। सबसे पहले हमें इसको ऐसे हाफ में फोल्ड करना है।
and you will get a crease along this line. Then आपको अपने पेपर को 90 डिग्री रोटेट करना है एंड अगेन इसको हाफ में फोल्ड करना है. नाउ अब आपको इसमें 2 डायगोनल फोल्ड्स करने हैं. तो फर्स्ट डायगोनल फोल्ड के लिए आपको इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ बस मिलाना है एंड एक क्रीज बनाना है. अब इसको अनफोल्ड करना है. नाउ अब ऑरिगेमी स्क्वायर बेस के लिए आपको अपने पेपर को इस तरीके से पकड़ना है एंड जो आपने डायगोनल फोल्ड्स बनाए थे उनको आपको अंदर की तरफ पुश करते हुए ऐसे एक स्क्वायर बेस रेडी करना है. अभी यहाँ पे अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है या फिर किसी का कोई स्टेप मिस हो रहा है या फिर कोई चाहता है कि मैं स्टेप को फिर से रिपीट करूँ, यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स दैट प्लीज रिपीट दिस स्टेप. Yeah, Jay, try to speak in both English and Hindi so that people understand थोड़ा सा. There are people जो कि समझ नहीं पा रहे. जय एक काम कर, फटाफट 1 सेकंड में फिर से ये 4 फोल्ड्स बता दे क्योंकि वेरी इजी है. यू कैन प्रोसीड. या बस जस्ट अ सेकंड. लास्ट स्टेप बता दे जस्ट वो. Just last. हाँ. For the last step, you have to hold your paper like this, and you have made this diagonal folds. Just push it in the folds like this, and here you have it as origami square base. Okay, so shall I proceed? Yes, you can. Okay. Now place your square base in such a way that this flap should point it towards you and this should point it next to you. And then hold one of the flaps and hold this edge along this crease line. Same for here. And repeat this process for the other side too. Up till here, if anyone has doubt, you can just write in the chat box that I have a doubt, or just please repeat the step. Yeah, Ajay, what you can do is इधर तक फटाफट बता दे एकदम. Right, not in detail, just फटाफट बता दे. From starting? हाँ, 20 seconds में फटाफट बता दे. Since some of them have joined late, so वही इसके बाद repeat नहीं होगा guys. Just a second, एक और बंदा enter हुआ. Just a second, so that yeah, guys ये अभी starting से बताएगा one last time, and then we will not repeat from the start. So please see it. फटाफट बता दीजिए. Then first of all, take your square shape and fold it in half.
Then rotate your paper and again fold in it half. Now make some diagonal folds. Now fold your paper like this and push this diagonal folds under and make like this, which is known as origami square base. Now you have to place this square base in such a way uh, such that this flap should point towards you and this points next to you. Now take this edge and fold along this crease. And repeat for the other side. Up till here, if anyone has doubt, you can just write in the chat box that repeat a step or I have a doubt. Great, Jay. You can proceed. Okay. Now for the next step, take this point and fold in such a way that you will get a crease along this line. Now unfold these flaps and take this point and make a petal fold. And now your paper should look something like this. Okay, should I repeat this step or should I move further? हाँ जय, एक बार रिपीट कर दे. Okay then. Petal fold, repeat it. Yeah. Now when you get this crease, just unfold these two flaps and take this corner to open up along this crease line. And just place these two edges over here. Okay, so should I continue? Okay then. Now repeat the same procedure for the other side. Open these flaps Okay, I'm repeating this step once again. Now you know you have a crease line.
Now unfold these two flaps, fold this corner and fold along this crease line. Okay, now for the next step, hold your paper in such a way that these 2 points should point towards you, and these 2 points should pointed next to you. And then take one of the points and fold it diagonally. And you will get a crease like this. Repeat for the other point. Now hold your paper in such a way like I am holding it right now, and open this flap and fold this flap along this creased line. And repeat for the other side. Now take one of this point and open it from here and fold it like this. Now fold this point diagonally. And you will get a crease line like this. And repeat for the other side. And now for the other side, just match this corner with this. And now just adjust the wing and you will have your origami bird. Okay, so anyone having any doubts or anyone wants to repeat any step? Great, guys. Kiska bana, if you could on your cameras and just show your butterfly. I see Ankita, nice one. Or right, Pooja, nice. Ayush, nice. Everyone, come on. If एक बार फिर से रिपीट भी कर देंगे, बट जिसका बन गया, could you just please on your cameras and show it to us so that we know कितने लोगों का बना है. ग्रेट, आयुष, ज्योतिका, ऋषभ, नाइस वन. इतने लोगों का बना है क्या, बाकियों का नहीं बना? कम ऑन गाइस, जिसका भी बना हो प्लीज ऑन योर कैमराज एंड शो इट टू अस. या ग्रेट. आई सी अ लॉट ऑफ लेट कमर्स आल्सो. सो लेट कमर्स जो भी आया है, अभी हम बटरफ्लाई भी सीखेंगे, हाउ टू मेक अ बटरफ्लाई. सो स्टे ट्यून्ड. ये बर्ड का हो गया. बर्ड एक और बार फटाफट रिपीट होगा, राइट? उसके बाद हम बटरफ्लाई करेंगे. गाइस कम ऑन प्लीज शो. मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है.
everyone. So जिसका भी bird बन गया है, please on your cameras and show it to us. Yeah, great, great. Swati, Bindra, Ankita, Pooja. Guys, come on, hold your butterfly in front of the cameras. Great, great. I see a lot of people. Nice, nice. I like Ayush ने कैसे पकड़ा है, वो मस्त उड़ा रहा है butterfly. That's great. Aksha, nice one. बढ़िया, काफी सही. Great, great. जय एक काम कर, इसको फटाफट रिपीट कर 2 मिनट में, ठीक है? डू पीपल वांट दिस टू बी रिपीटेड, या फिर हम बटरफ्लाई के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? जिनका नहीं हुआ है, कितनों का नहीं हुआ है, प्लीज लाइक चैट में टाइप कर दो, यस यस लिख दो, सो दैट वी विल रिपीट इट. अगर नहीं तो वी कैन स्टार्ट विथ बटरफ्लाई. यस, यश राठी हैज बीन टेक्सटिंग अ लॉट. ठीक है जय, एक काम कर, फटाफट रिपीट कर दे, एंड देन इसके बाद पहले बटरफ्लाई दिखा दे. बटरफ्लाई दिखा दे. बटरफ्लाई जो हम अभी, लाइक ये बर्ड हो गया. नाउ वी विल लर्न दिस बटरफ्लाई. सी एवरीवन सी इन जय स्क्रीन. सो बटरफ्लाई सीखेंगे अब हम. ग्रेट. सो एक सेकेंड, अभी लोग लेट आ रहे हैं, मैं उनको भी एक बार अनाउंस कर दूं. या जय फटाफट 2 मिनट में रिपीट कर दे, जस्ट यू नो बहुत ज्यादा फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट? हाँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग. जस्ट रिपीट एक बार फटाफट. राइट, ग्रेट गाइस. तो अभी आई हैव सीन के काफी लोग लेट ज्वाइन हुए. सो हमने बर्ड बनाना सीख लिया है, बट जय इज रिपीटिंग दैट, सो यू वोंट बी एबल टू फॉलो दैट अभी. सो इसके बाद हम बटरफ्लाई भी सीख रहे हैं, सो यू कैन लर्न बटरफ्लाई. या जय रिपीट, 2 मिनट में रिपीट कर, एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद बटरफ्लाई. ग्रेट. First, take your square sheet of paper and fold it in a half. Then rotate it 90 degrees. Then again fold it in a half. Then unfold. Then make some diagonal folds. Now hold your paper like this and push this diagonal fold inside, and you will have it a origami square piece. And now hold this square base in such a way that these points should point towards you and this point should point next to you. Now fold this edge along this creased line. And repeat for other sides. Now fold this point in such a way that you will have a creased line like this. Now unfold these two flaps and hold this corner and fold it along this creased line. And repeat for the other side. Now hold your paper in such a way that these 2 points should point it towards you and these 2 points should point next to you. Now hold one of the points to create a diagonal crease and repeat for the other point. Now fold it like this. Now open this and just push this point inside.
And for the last step, just fold this to flaps to create a diamond piece. And you have made your origami bird. Great, great, Jay. So I see a lot of people who have joined late. So we have made a bird. Now we will start with the butterfly. So you guys can take another piece of paper, right? We are gonna start new. That's great. That's yeah, nice butterfly. जो भी दिखा रहा है. Great. Great. So bird ho gaya hai. Now we will start with butterfly. So everyone please take a fresh paper, right? Or you can use this paper itself, bird ko khol ke. But yeah, take a fresh paper and we are gonna make a butterfly. Jay, I think. Hello, Jay. Yeah, he's back. Jay, you can unmute yourself now. I've sent you a request. Huh. Okay, now for our next model, we're making this origami butterfly. For this, first fold your square sheet in half. And you will get a crease like. Now take one edge and fold this edge along this crease line. Now rotate your paper and fold this edge along this crease line. Now rotate your paper around 90 degrees and fold your paper in half. And you will get a crease like this. Now take this edge and fold it up to this crease line. And repeat for the other side. Now take one of the corner and meet it with the opposite corner. Now repeat for the other side. And now your paper should look something like this.
Okay, so shall I proceed? Yeah, Jay, yes. Okay. Now hold this side and just pull out this and repeat for the other side. Now put your paper upside down. Here you will see a diagonal crease. Now take this edge and fold it up to this crease line. Do not fold completely, just fold it up to this diagonal crease line. Such that you will having a crease line like this. Now repeat for the other side. And same for the this side. And then the next step is quite difficult. So I request everyone to please first watch and then fold your paper. And for the next step, you have to fold it like this. Okay, so should I move further or should I repeat this step? Yeah, Jay, you can repeat the last step एक बार. हाँ, from here, right. First take this two edges and fold it like this.
जय एक और बार रिपीट कर दे। Take these two edges and meet it to the center. या गाइस, अगर इधर तक कोई डाउट है तो कैन आस्क, बिकॉज आई फील दिस इज अ बिट टफ। सो इधर थोड़ा 1 मिनट का पॉज लेते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग दे कैन राइट इन द चैट। सबका हो गया? जिसका जिसका हो गया शो मी। कोई इशू नहीं है। ग्रेट जय, यू कैन मूव अहेड। ग्रेट, आई सी लोगों का हो गया। Okay. ग्रेट ग्रेट। Now put your paper upside down. Then fold it in half and make a crease. Then fold it like this. Now for the next step, take one of a flap and fold it like this. जय, इसके पहले एक और बार कर दे। Okay. रिपीट कर दे फ्रॉम फ्रॉम हियर। From here, now fold your paper in half. And just fold it like this. Great guys, anyone has any doubt up till here, since this is a crucial step? Once more a bit slow. ठीक है, एक और बार दिखा देते हैं आराम से। Okay. And then we will not repeat. So guys, this is the last time, then we will proceed. Now first fold it in a half and make a tight crease. Then unfold it and fold it in the other half. And now fold it like this. Like if you are doing it from top, you will see a plus sign. Now for the next step, open one of the flap and fold it along this crease line. And now repeat with the other flaps.
Now take a paper like this and fold it. Okay, so shall I move further? Guys, should we move ahead or not, since we feel that this is a bit tough? कित्तों का इधर तक हो गया? If you know they could show us. अगर काफियों का नहीं हुआ है तो एक बार स्टार्ट से we can do it quickly. किसी का हुआ इधर तक? Anyone? जिसका इधर तक हो गया, could you please on your camera and show it to us so that we can move forward? हेलो गाइस, किसी का हुआ है या you want us to repeat? जय, एक बार स्टार्ट से रिपीट कर दे ब्रो फटाफट. Okay. हाँ ठीक है गाइस, सो एक और बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट. सो प्लीज पे अटेंशन एंड सब लोग आई गेस जय की स्क्रीन को पिन कर लो उसकी स्क्रीन को, एंड फोन ऐसे रख लो फिर ज्वाइनिंग फ्रॉम द फोन सो दैट यू कैन सी अच्छे से, राइट? या दिस इज द लास्ट टाइम ही इज रिपीटिंग बटरफ्लाई, सो इसके बाद इट्स गोइंग टू एंड. सो या Now first take a paper and fold it in a half. And you will get a crease like this. Now take this edge and fold it up to this crease line. And repeat for the other side. Now hold your paper like this and again fold it in half. Then unfold it and take this edge to fold this crease line. And repeat for the other side. Now fold it in a diagonal way. Now hold this side and gently pull this side. And repeat for the other side. Now fold your paper upside down and you will see you will have some crease line along the diagonals.
and along this half fold. First, take this edge and fold up to this crease line. Don't fold it completely up until this diagonal lines or diagonal crease. And you will get a crease like this. Now repeat for the other side. Now this is a quite difficult step. So I request everyone to first watch this step and then fold it. Now put your paper upside down. And fold it in a half. Now take this flap and fold along this line. And repeat for the others. So shall we proceed for the next step? Yeah, Jay, you can. I think a lot of them काफी को हो गया है. Great, Yash Rathi. Okay. Yeah. Now for the next step, hold your butterfly like this and take one of its wings and fold it along this line. Like this. Repeat for the other wing. Now take this edge and fold it up to this crease line. Same for this edge. Fold this edge up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold it up to this crease line. Now take this edge and fold
Same for this edge. Fold this edge up to this crease.
then you will have two crease lines like this. Should I move further, or anyone wants to repeat the step? Okay, so I think we should repeat this step. Now, first of all, hold your butterfly like this. And take one of its wing and fold it along this crease line like this. And then same for the other wing. Okay, so now take this edge and fold up to this edge. Yeah, okay. Now again, fold this edge along this edge. And you will get two crease like this and this. So up till here, anyone having any doubts? Okay. Now for the next step, fold this flap in half. Now unfold it. You will see that you will have another crease like this. Now hold this corner and fold up to this crease line. Then again fold this in half. Now repeat for the other side.
Jay, you are on mute. Unmute yourself. I have already unmuted. Okay. So up till here, any doubts or should I repeat? Jay, I think let's close this session because a lot of them have left already. So butterfly was a bit tough, guys. So अगर आपका basic structure भी बन गया है, then it's good, right? ये जो last की जो detail है, that was a bit tough. We can understand, right? So basic structure बन गया तो then it's good. Well, only Plus ये दो video steps upload ही भी हो बचे जाएगा. हैं तो like अगर हाँ हाँ तो हाँ 5 हाँ. मिनट्स Close के लिए this होगा. मतलब भी हाँ फॉर श्योर वो कर दे बट वी वोंट रिपीट दिस फ्रॉम द स्टार्ट सो ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा इफ एनीवन वांट्स टू सी एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम हैव डन ग्रेट ऋषभ ज्योतिका सो या लेट्स रैप दिस अप सो वी वोंट रिपीट दिस वरना बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा सो यू गाइस कैन फॉलो फ्रॉम हियर ग्रेट या जाए Now take this flap and just fold it in a circular. And now for the last step, just fold this corner. And you have completed with the origami butterfly. ग्रेट गाइस एवरीवन जिसका भी बन गया हो बटरफ्लाई दे कुड प्लीज ऑन योर कैमराज एंड शो बटरफ्लाई बर्ड जो भी बना है दोनों साथ में भी रख के दिखा सकते हो I want to take a screenshot for our Instagram story so everyone can just on your cameras and show आज जो भी बनाया आपने bird butterfly that's great Swati Pooja Rishabh come on guys on your cameras and you can show please अपना कैमरा ऑन करके दिखा